नमस्कार, मैं हूं यश चावला। पहनी है मैंने टी शर्ट येलो, लेकिन मैच है दिल्ली का। सेंस नहीं बन रहा है इन बातों का, मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि आज भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं दिन भर और कल से दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में, उन चीजों का भी मुझे सेंस थोड़ा कम नजर समझ में आ रहा है। टू डिस्कस दैट आई हैव विद मी वेयरिंग द सेम टी शर्ट, नॉट द सेम टी शर्ट, डिफरेंट टी शर्ट, सेम कलर, अर्चित नायर and Shubham Mishra. Thank you so much, guys, for joining us. Before we get talking about what is happening with Delhi Capitals, a quick reminder: आज मैच है Delhi Capitals और पंजाब किंग्स का. मैच is going to be played in Mumbai. पुणे में नहीं है, तो जो बाहर खड़े ग्राउंड के पुणे में, प्लीज लाइटें ऑफ है वहां पे, वापस आ जाओ. मैच इज इन मुंबई. बिकॉज ऑफ द चेंज इन द लोकेशन इज बिकॉज बीसीसीआई को लगता है कि पुणे की तो 2 घंटे की जर्नी है, उसमें कोविड हो सकता है, लेकिन अगर 40 मिनट में आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे नवी मुंबई से, तो आपको कोविड नहीं होगा. बट एनीवे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं दोनों टीमों का. बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज पंजाब हैज अ स्लाइट एज ओवर दिल्ली. बहुत साल से खेल रहे हैं एक दूसरे से साथ. 28 मैचेस, 15 विंस फॉर पंजाब एंड 13 फॉर दिल्ली. तो पहले लेट्स गेट द प्रेडिक्शंस आउट ऑफ द वे. लेट्स स्टार्ट विद शुभम. शुभम, क्या लगता है आज कौन जीतेगा? यश, मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स आज आंकड़ों के साथ जाना चाहूंगा. ओके. अर्चित? आई थिंक दिल्ली कंटिन्यू करेंगे अपना विनिंग रन, सो आई गो विद दिल्ली. ओके. कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी पता नहीं. पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं. इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, इफ यू नोटिस, both these teams are fighting to get into this spot on this page because of course Gujarat Titans are there, Bangalore, Rajasthan, सब कुछ है वहां पे. सेकंड हाफ में देखें तो केकेआर के बाद में पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स आर इन द 7th and 8th spot. 9th 10th की तो क्या कल बात करेंगे, लेकिन अगर जो भी आज जीता will be on the first page. So Archit, going by the winning performance of the last match, do you think Delhi is kind of more settled as compared to Punjab? कहीं ना कहीं head to head दोनों के बीच में. No, also I feel there's more of the uncertainty in the Delhi camp. With all these cases, I think their fittest 11 might be trying to isolate themselves. We actually don't know what's happening within that camp. कि ये जो पूरा कोविड के नाम पे 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, I don't know what the numbers are finally, but I feel 6 total. Wow, that's crazy. So I don't know. 2 players only. 2 players, but 6 staff in all, right? 4 staff. Crazy. So yeah, I feel their best 11 has been kept away from all those guys over the last 2 days, I'm guessing. So they might be really working hard. This is more of a PR stunt now to pull off a win. I feel they'll go harder for that. But you have Mitchell Marsh, who played the last match. Tim Seifert, who was coming in, was in fact reportedly practicing till last year. But Shubham, कहीं ना कहीं I know SOPs हैं बीसीसीआई की अपनी जगह पे, तभी मैच हो पा रहा है. वरना अगर लास्ट सीजन की बात करते हैं, अगर यही सिचुएशन होती तो अब तक तो मैच रुक गया होता. बिल्कुल यश, बिल्कुल. जैसे पिछली बार भी हमने देखा था कि बीच में एकदम से केसेस निकल आए थे. ये मुकाबला चल रहा है, ये फैंस के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि पिछली बार भी देखने को मिला था कि वो वर्ल्ड कप के टाइम पे वो आईपीएल को मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा था, और वो फॉरेन प्लेयर्स जो थे उनका भी काफी कम फॉरेन प्लेयर्स भी दिखाई दिए थे. तो ठीक है, अगर आईपीएल इसी तरीके से आगे चलता है तो बहुत अच्छी न्यूज होगी. बट अर्चित, ये जो बात शुभम ने बोली, इसी तरह से चलता रहे. इज इट द न्यू नॉर्मल कि भैया केसेस कितने भी हो, आपके पास फिट 11 है तो फिट 11 खिला देंगे? एंड कितने कोविड टेस्ट हुए होंगे भाई? Yeah, I mean, I saw a few tweets that said ki the Delhi management is doing door-to-door testing, and those who are negative will be, I mean, all speculation, I know. But that being said, the entire bubble setup that is being put in place, right? Abhi us pe काफी questions aate hain, right? I mean, what is the source? Maybe there are too many people let into stadiums. वो जो ball sanitizing protocols hai, is it coming in from there? We really don't know, because when you go to the stadium and see a ball hit for a 6, it is a good couple of minutes before the ball reaches back to the players, because it has to be thrown over, umpire goes and sanitizes it. इतना stringent rules के बावजूद अगर ये breach हुआ है, then it's a bit of a worry. And coming back to your opening statement, I'm a bit confused. The shift from Pune to Mumbai, I mean, if this team in Navi Mumbai going to Pune is already tested positive for a few people in the squad, what are they achieving by shifting to Bombay? I really don't know. And like you said, travel time कम कर रहे हो और कुछ भी नहीं है, तो वो भी कितना कम करोगे? Are you putting more people at risk? I think that should be the bigger question, right? By getting them to stadiums, getting them into dressing rooms which are going to be used. पता नहीं. I mean, it's all. यही चीज शुभम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हो कि अगर पंजाब किंग्स बोलते हमने नहीं खेलना, कर लो जो करना है, we don't want our players to be compromised, फिर क्या करें? मतलब ये तो एक बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाती है ना.
और कोविड होने के बाद सीन थोड़ी लग जाते हैं आपके कि भाई यू नो रेड फ्लैग, लाल बत्तियां जल जाएंगी आपके आसपास कि इसको कोविड से दूर हो। ऐसा तो होता नहीं है। रैपिड टेस्टिंग जो हो रही है वो भी मतलब नॉट 100% श्योर है। बिल्कुल यश, बिल्कुल सही बात है। आप काफी फैसले की इसकी बात करें तो खैर मैच को देखते हुए बीसीसीआई की बस यही रहती है कि आईपीएल को किसी तरीके से करवाना है, वो वाला हिसाब किताब रहता है कि मैच जो है वो ऑन रहना चाहिए हर हाल में, क्योंकि बिल्कुल प्लेयर्स निकले हैं। क्योंकि जब फिजियो निकले थे तब भी ये बात पक्की थी कि प्लेयर्स भी उनके कांटेक्ट में आए होंगे, तो देखने को मिलेगा आगे कि दिल्ली के प्लेयर्स। और बड़ी बात यह है कि आरसीबी से मैच खेला था, आज पंजाब से भी मैच खेलेंगे, तो वो रैपिड टेस्ट है उसमें आप नेगेटिव आए हैं बेशक, लेकिन आगे अगर इसी में से कोई प्लेयर पॉजिटिव निकलता है तो वो फिर पंजाब के खेमे में भी जाएगा, तो इसी तरीके से फिर वो सिचुएशन ना आ जाए। आई नो बहुत सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव थॉट फॉर दिल्ली कैपिटल्स, बट एक पॉजिटिव जो अच्छा मिला है दिल्ली को है दैट दे वन द टॉस एंड ऋषभ पंत हैज डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। अर्चित, आई नो इट्स अ बिट इनसेंसिटिव टू से दिस, बट ये पॉजिटिव दिल्ली के लिए काम आ जाएगा। I mean, well, if they're taking the field first, I think it's a good sign. I mean, at least by the time more cases come, there are fewer people who need on the pitch while they're batting. But that being said, interesting indeed. I think bowling first has been the norm also, right? I think there are some stats going around about all teams winning the toss are bowling first. Is it? Or I may be getting All it wrong. teams. All teams. So All yeah, teams. I think the due factor of Bombay is clearly the decision maker here. But yeah, I think it's good, and Rishabh Pant has taken that call, backing his players to chase it down. I think it'll be a good fun game. I'm sure it is going to be a good fun game, but कहीं ना कहीं शुभम पंजाब किंग्स की जो प्रॉमिस हम हमेशा बात करते हैं वो आईपीएल ऑक्शंस के टाइम में भी कि दिस इज लुकिंग लाइक द बेस्ट टीम ऑन पेपर, सबसे बढ़िया बैलेंस टीम है, पावर हिटर्स हैं, ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन डिस्प्ले में कुछ और खाने के स्वाद में कुछ और, मतलब यही लग रहा है ना। बिल्कुल यश, बिल्कुल लग रहा है। देखिए एक बात, पहली बात ये भी है कि कप्तानी आप किस तरीके से कर रहे हैं, कैप्टनसी किस तरह से आप लेके चल रहे हैं, किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, कब किससे बॉलिंग करानी है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अरे कप्तान वापस आ गए हैं, मैं आपको बता दूं कप्तान वापस आ गए हैं। बिल्कुल कप्तान वापस आ गए, ये शायद पंजाब के लिए अच्छी खबर नहीं है कि मयंक अग्रवाल वापस आ गए, लेकिन बात वही कह रहा हूं, बैटिंग की अगर बात करें, मयंक अग्रवाल रन्स बना नहीं रहे, ऊपर से शिखर धवन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं। बॉलिंग से भी अगर कैप्टनसी देखे तो आपको ये पता है कि ओडिन स्मिथ आपको 2 मैच हरवा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप उनका यूज अगर 18वें और 19वें ओवर में कर रहे हैं, उनको बचा के रख रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर आपके बॉलर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, यशदीप ने उस तरह से परफॉर्म किया नहीं है, पैसा आपने मोटा खर्च किया है प्लेयर्स पर, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस अब तक दिखाई दिया नहीं है। ओके खबर ये भी है कि सरफराज अहमद हैज कम इन फ्रॉम मिचेल मार्श, फुल प्लेइंग 11 अभी भी अवेटेड है, हम आपको जरूर बताएंगे। बट अर्चित, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट दिल्ली। कुछ ना हो, कुलदीप यादव का तो करियर उन्होंने रिजरेक्ट कर ही दिया है इस बार। Definitely. I mean, I think Karthik with RCB, Yadav with Delhi. I think these are the stories that are going to come out of the IPL as the resurgence stories, and it's good. And Chahal. And Chahal, how could I forget the five? I mean, these guys, whatever reasons, whatever mental blocks that were preventing from performing, with all due respect to whatever reasons, maybe they were putting out their best. They were, obstructed by some जो भी reasons थे उनके पास. But yeah, Kuldeep Yadav success story, I think, after this move. ओके थोड़ा डीप डाइव करते हैं दिल्ली में। शुभम, जो ओपनिंग पार्टनरशिप है शिखर धवन कह रहा हूं, अभी भी दिल्ली के नाम से शिखर धवन याद आते हैं, बट डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की, मतलब ये तो क्लासिक केस है ना, रब ने बना दी जोड़ी, मेड फॉर ईच अदर, दोनों अटैकिंग है एंड रन भी बना रहे हैं दोनों। बिल्कुल यश, बिल्कुल रन बना रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पृथ्वी शॉ अटैक करते हैं तो वार्नर दूसरी तरफ से शांत होते हैं, एक एंकर का रोल अपनाते हैं, और सेम पे अगर ये सिचुएशन अगर वार्नर अटैक करते हैं तो पृथ्वी शॉ। दिल्ली के लिए अच्छी चीज यही है कि उनकी ओपनिंग्स जो है, ओपनिंग स्टैंड अगर आप पिछले 3-4 मैच देखें तो लगातार अच्छी रही है, ऊपर से रन्स बन रहे हैं, अगर नीचे से बैट्समैन अगर वो सपोर्ट दे देंगे तो शायद दिल्ली हर मुकाबले में 180-190 बोल्ट पर आपको लगाती दिख जाएगी। ओके, दिल्ली का प्लेइंग 11 में आपको कुछ देर में दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं अर्चित से ऋषभ पंत के बारे में, बिकॉज हमेशा बात रही है कि हाउ फियरलेस ऋषभ पंत हैज बीन, हाउ गुड ही हैज बीन, बट कहीं ना कहीं वो ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है स्कोर बोर्ड के ऊपर, रन नहीं बन रहे हैं, मैच विनिंग नॉक्स उनसे एसोसिएट करे जा रहे हो नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग विद ऋषभ पंत राइट नाउ? Is it the भोज of captaincy? I don't know. I could only think that. ठीक है, बहुत young player है, and that's a lot of responsibility to give.
But it's not his first season also, right? I think he has captained for Delhi in the past. But that being said, there is another player in the Delhi ranks who I'm also worried, which is Shardul Thakur, another high promise person with the bat and ball. Very few numbers coming out of his kitty as well. So I don't know. I think maybe the Delhi camp, wants to kind of dig deep on those guys and see what's happening, because with the next tournaments coming up, these guys are definitely playing for India, right? So form can be a bit of a concern अगर this is how the IPL is going. And हमने देखा है, because बहुत सारे seasons में ये हुआ है कि just before an India tour people come into the IPL and their form picks up and हम बोलते हैं कि अरे ये तो short इंडिया के लिए अभी खेलने वाला है, but Pant and Shardul, I don't know, they've not been the guys we have seen in the last couple of years. तो वो थोड़ा टेंशन वाली बात है, I feel. ओके जल्दी से नजर डालते हैं पंजाब के प्लेइंग 11 पे, क्योंकि वो हमारे पास पहले आ चुकी है. काफी इंटरेस्टिंग है, ज्यादा चेंजेस नहीं है. मयंक अग्रवाल इज बैक, शिखर धवन इज देयर, जॉनी बेस्टो, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, नेथन एलिस. ये एक इंटरेस्टिंग नाम है, क्योंकि इसको रबाडा, राहुल चह, वैभव अरोड़ा एंड अर्शदीप सिंह, द यूजुअल सस्पेक्ट्स. सबसे पहले शुभम, ये इस प्लेइंग 11 पे अगर नजर रखते हैं तो उसमें दिखता है अर्शदीप सिंह. विकेट आई नो नहीं मिले उनको, लेकिन सक्सेसफुल वो हमेशा रहे, बिकॉज रन रोके उन्होंने अभी. बिल्कुल यश, बिल्कुल रोके. देखिए अगर आप उनकी बात भी करेंगे तो मेन 18वां और 19वां ओवर होता है, वो उनको हर मैच में दिया जाता है. लगातार 2 18वें ओवर उनसे कराए गए थे. वहां पर वो जो रन्स का फ्लो है वो रोकते हैं, वो 5 से 6 ओवर का रन दे देते हैं, मैच जो है वो पंजाब के लिए बना देते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपने ओडियन स्मिथ से अगर आप 19वां ओवर करवाएंगे तो वो जो मेहनत है हर्षदीप की, और जो पीछे मेहनत करके आप बॉलर्स वो भी खराब हो जाएगी. अच्छी बात यह है कि पंजाब ने आज ओडियन स्मिथ को ड्रॉप किया है, जो कि अच्छी खबर भी है पंजाब के लिए, क्योंकि नेथन एलिस अच्छे बॉलर थे, स्पिनर हैं और आप पीछे परफॉर्म भी कर चुके हैं. तो देखना होगा किस तरीके से आज दिखाते हैं. ओके दिल्ली के प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी प्लेइंग 11 अब आ चुकी है. इंटरेस्टिंग ये होगा कि पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर ओपन कर रहे हैं, पंत अपनी जगह पे है, रॉबिन पावेल को दोबारा मौका मिला है, सरफराज खान इज इन द टीम, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल, कुलदीप, मुस्तफिजुर, खलील. इसमें इंटरनेशनल प्लेयर कितने हैं? 1 2 अर्चित, व्हाट आर योर थॉट्स? 3 Quite bold. Yeah, I think that's a bold move. ऑप्शन ही क्या है मतलब अभी? Yeah. अभी now without Marsh, भी कम देना. ऑक्शन के बाद भी everyone is questioning that you have just 5-6 players in your squad. Nokia is not fit. Tim Seifert is down. So is Mitchell Marsh. Correct. They just had 5 people who could make it, and 2 of them are out. Bad team building strategy, maybe, but yeah, I think. But this 11 is not weak by any measure. Like I said, it's not weak. We have the depth in the batting. Again, the day Pant and Shardul decided to show up, this squad bats to number 8. So it's not a worry. But I mean, how much of the mind game, this entire COVID saga has played, relocation of venue, all of that. How the mental state is. It'll all show. I'm very optimistic that Delhi will come out all guns blazing. But let's see. दो ऑप्शन और बचे हैं इनके पास, शेन वॉटसन और रिकी पॉन्टिंग. खिला सकते हैं उनको भी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. यस, रिकी पॉन्टिंग और शेन वॉटसन का पता नहीं, लेकिन अगर नोकिया की बात करें, क्यों नहीं खिला रहे, क्या वजह है, मेरी समझ से परे है. क्योंकि पिछले सीजन इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था आपके लिए, आपने रिटेन किया था नोकिया को, ये देखते हुए भी सिर्फ एक मैच उनका खराब गया था, उसके बावजूद आपने उनको मौका नहीं दिया है. मुस्तफिजुर रहमान आप खिला रहे हैं, पिछले मैच में 4 ओवर में 48 रन खाए थे. खिलाइए, 4 फॉरेन प्लेयर्स आपके पूरे भी नहीं हो रहे हैं. उसके बावजूद भी अगर आप नोकिया को रिटेन करने के बावजूद भी अगर टीम में खिला नहीं रहे, तो ये फैसला थोड़ा सटपटा है. ये सीजन रिटेन प्लेयर्स का है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको. ये तो ड्राफ्ट प्लेयर्स का या पुराने ही सिक्कों का है जो वापस चल रहे हैं. अर्चित, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट नोकिया? इंटरेस्टिंग बात बोली शुभम ने. Yeah, very interesting. But Shubham, don't you think this is also playing in line with what Punjab did? Because keeping a bowler like Archeet, they are going for people who can conserve some runs. I think like even Cummins goes for a lot of runs. Sorry, that's my Dream 11 reminder. But a lot of these players, they concede runs and get a couple of wickets. So do you want 2 for 48, 2 for 50, or do you want none for a 35? Kind of a bowler who can bowl those medium pacers in the 18th, 19th overs and restrict the batting. I think that is a strategy, and also they don't have much choice. But Naughty ka question is a very valid one.
वेरी वैलिड। और विकेट नहीं ले पाए, 9 के एक ही मैच खेला है, लेकिन किसकी नजर है पर्पल कैप पे? हु इज करंटली ऑन टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड? पर्पल कैप पे नजर डालते हैं, इट इज द वन एंड ओनली मिस्टर युजवेंद्र चहल। 17 विकेट्स इन 6 मैचेस। मतलब इतने विकेट तो लोग 14 मैच खेलने के बाद लेते हैं, ये 6 मैच में ही ले गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। बट हिज टीममेट ओनली फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स इज लीडिंग द ऑरेंज कैप एज वेल। जॉस बटलर, नाम तो सुना ही होगा। 2 सेंचुरीज इन दिस आईपीएल, 375 रन्स इन 6 मैचेस। मुझे लगता नहीं है कि ये, मतलब आई थिंक विराट कोहली's record of 900 plus runs is in danger, मुझे लगता है था, but that's a conversation for another day. Let's go into Punjab's camp now. Archeet, Shah Rukh Khan, the big celebrated guy from Tamil Nadu, won 2 back-to-back Syed Mushtaq Ali trophies, considered the next big finisher in Indian cricket. बहुत बढ़िया, सबकी नजरें उस पे है, लेकिन मैच में टाइट एफएस. What do you think is happening? Big disappointment. I mean, like you said, tight FS is very correct. But again, with expectation, this entire Bhoj, especially when you come from an auction, I don't know. Did you just say that all the purchase people are not doing well? Because I think he's one of those guys who have been bought and not really performing. And kitna, I think he's played all the 5-6 games. Definitely some time for introspection. But again, they've had their problems with the bowlers as well. So I think they're just all over the place right now, Punjab, and time will tell. हाँ शुभम, go on. यश, मुझे लगता है कि पंजाब के खेमे में ये सब कुछ है, क्योंकि जो प्लेयर जहां जाता है पंजाब में वो फ्लॉप होने लगता है। आप राहुल चार को देखिए, मुंबई के लिए अच्छा कर रहे थे, यहाँ पहुंचने के बाद क्या हो गया। रबाडा दिल्ली के लिए अच्छा कर रहे थे, यहाँ पहुंच के क्या हो गया। मतलब पंजाब के साथ वो किस्मत ही साथ नहीं देती है कि वहां पे कुछ बड़ा हो जाए। बट किस्मत है ना, वो लोग ओवर डिपेंडेंसी लगता है, मुझे लगता है कि लियम लिविंगस्टन पे ओवर डिपेंडेंसी है। शुभम, आपको क्या लगता है? मतलब ये जो रन बना रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, रन रेट भी बढ़ा रहे हैं, और बैटिंग ऑर्डर में ऐसे लगता है कि अगर ये ना चले तो फिर कुछ ना हुआ। बिल्कुल यश, बिल्कुल। लिविंगस्टोन, वैसे प्लेयर ऐसे जाने जाते हैं कि वो आपको 2 से 4 मैच जिताएंगे अगर आप वो 10 या 11 मैच खेल रहे हैं। अभी तक लगातार रन्स बना रहे हैं, और यही वजह है कि लिविंगस्टोन वो 60 से 70 रन इतनी तेजी से आके बना देते हैं कि पंजाब गिरते गिरते भी 170-180 बोल्ट पे लगा लेती है। बेस्ट की फॉर्म यकीनन पंजाब के लिए कंसर्न है, रन्स नहीं बन रहे। जैसे मैंने पहले भी अभी कहा कि धवन जब दूसरी टीम में खेल रहे थे तो सेंचुरी लगा रहे थे, 50 प्लस स्कोर हो रहे थे। धवन का भी बदला नहीं चल रहा है यहाँ पर। नीचे आएंगे, शाहरुख खान से रन्स नहीं बन रहे हैं, पैसा बहुत खर्च किया है आपने। बैटिंग यकीनन कंसर्न है, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स तो रख लिए हैं, लेकिन अभी तक वैसा परफॉर्मेंस आया नहीं है। नाम बड़े दर्शन छोटे, मे बी दैट्स द प्रॉब्लम विद पंजाब किंग्स। बट अर्चित, ये इंटरेस्टिंग बात अभी पहले शुभम ने भी बोली थी कि मयंक अग्रवाल के आने से नुकसान है। आई थिंक आपने भी यही बात बोली थी। बट कहीं ना कहीं व्हेन यू लूज अ कैप्टन टू एन इंजरी, इवन इफ इट्स फॉर वन गेम, योर स्क्वाड गेट्स अफेक्टेड मेंटली कि अरे भाई कप्तान नहीं है, समवन एल्स इज प्लेइंग। डू यू थिंक, आई मीन, डू यू एग्री विद दैट? Not for the IPL, I feel. I mean, there is too much of strategy that goes on from the boundary ropes, those strategic timeouts, every over break. I don't think it's too much of a dent that it causes, honestly. And IPL itna high-paced tournament bhi hai, where all the players know that injury is one big risk. I'm sure the team coaching depth bhi itna hota hai, right? It's not like the international games. So I don't think captaincy was much of the reason for that loss, but I just think it's the overall unit is not gotten together. I mean, you buy these players, you expect them to do well, they don't. Your imports don't do well. Shubham? शुभम, यश, अगर बात पंजाब की हो रही है तो दिल्ली की अगर बैटिंग की बात करें, ऊपर से पृथ्वी शॉ और वार्नर रन बना रहे हैं, लेकिन हाल जो है वो पंजाब वाला दिल्ली का भी है, क्योंकि पंत का बल्ला चल नहीं रहा। उसके बाद सरफराज शार्दुल पे आपने काफी पैसा लगाया था, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दिल्ली के लिए कंसर्न है? ऐसे सीजन आगे बढ़ रहा है। This is a classic case of two underachieving teams playing each other, कि जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे। मतलब पढ़ते तो हम सब है, नंबर नहीं आ रहे बस। बट कोई बात नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ऊपर शॉ एंड वार्नर की छांव जैसी हट जाती है तो फिर धूप बहुत तेज लगती है इन लोगों को। एंड आई थिंक ऋषभ पंत इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दिल्लीज मिडिल ऑर्डर इज फेलिंग, क्योंकि उनके साथ आई थिंक एक 3-4-5 के बीच में जो कंफ्यूजन चल रहा है वो सॉर्ट होना चाहिए। बिकॉज ललित यादव है, काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद ना वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। ललित यादव इज गुड फॉर कंसोलिडेटिंग, गुड फॉर अ लेट पुश, बट यू नीड समवन जो कि 10 से 15 या 10 से 18वें ओवर के बीच में ना
push करे run, and I think that's probably what's missing. But overall, I mean, if you see Delhi Capitals, Archeet थोड़ी सी better लग रही है. I mean, specifically keeping in mind their bowling. Yes, I mean, but whichever side has Rabada and Chahar, I don't think you can call them a bad bowling attack also, right? And Nathan Ellis is he's not proven himself this season, probably lack of opportunity, whatever will be the reason. But I think it's a balanced unit of two underachievers, as you rightly mentioned. And I think it's a good chance for both of them to come in the top half also, and I think that will kind of give both these teams that push that they needed, to get going with those frequent wins. I think both these teams have been winning and losing alternate games. Consistency. Consistency is missing, correct. And whatever the reason, I don't know how COVID will pan out for Delhi in the coming days or weeks. I hope it's not bad. I hope it goes all green, and both teams need to start winning. And obviously there are many other teams in this IPL that need to start winning, but these guys need to start making it happen. Let's not go there. You're probably wearing the wrong t-shirt today. But anyway, I think we just got a comment from Debashish Ghosh, who has the right recipe for success for even Punjab Kings and Delhi Capitals. Good vibes for both the teams. I really hope कि आगे और कोविड केसेस ना आए, जिससे कि मैच चलता रहे, टूर्नामेंट चलता रहे, हम सब लोगों का शाम का एंटरटेनमेंट चलता रहे. खूब मजा आता है आईपीएल देखने में, आप लोगों को भी मजा आता है. तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें कि कौन जीतेगा आज का मैच, पंजाब किंग्स या दिल्ली कैपिटल्स. Despite the scare, despite everything, the match is going on. The match will be live in just about 10-12 minutes from now. So do watch the match. Do comment and let us know who's going to win. And also download the editor जी. आप अगर आपने नहीं करी तो बहुत गलत करें, क्योंकि सारे news and updates आपको मिलते रहते हैं. But thank you so much Archeet Nayar and Shubham Mishra for joining us. You can follow them on social media. उनके handles वहाँ हैं, मुझे भी follow कर लीजिए. And साथ ही साथ social media पे editor जी को हर जगह follow करिए. Thank you so much for watching.